Hello friends, this is Karthikeya Singh, working as an assistant professor in the School of Management Sciences, Varanasi. And today we are into the sixth part of this lecture video series, which is going to deal with how to prepare summer internship project report on the basis of primary as well as secondary data. So far we have covered introduction, industry overview, company overview, and experiential learning. We have kept it and we are going to cover it at the end of the entire lecture series. And in the section B, people have already covered introduction part, extensive literature survey, and we are already covered different types of research. And on the basis of those types of research, you are going to utilize in your summer internship project report also. And today we are going to cover the entire research process. If we'll equip ourselves with that research process, it will definitely going to help you to create a framework of the entire research work. So understanding the entire research process is very much important. So we are going to go ahead with the research process. And this research process comprises of, we are into the research methodology part. Now this is the research process. Research process comprises of problem identification, a review of literature, development of working hypothesis, preparation of research design, determining sample design, then collection of data, then execution of the project, then analysis of data, and then hypothesis testing, generalization and interpretation of the data, and finally preparation of the report. So these are the 11 steps through which we usually carry out our research. The most important thing would be problem identification, and once we are done with the problem identification, we are going to do extensive literature survey, and after developing extensive literature survey, we are going to develop our working hypothesis. Once our working hypothesis is done, we'll definitely prepare our research design, and after preparing research design, we are going to do the sampling design, and after completing sampling design, we are going to do or start the data collection. Once data collection will be over, we'll be checking the execution of the project, and then we are going to do the analysis of data, then hypothesis testing, then generalization and interpretation of the data, and finally preparation of the report. So these are 11 steps which we are expected to learn it by heart, because at the time of examination also asked. So this is very important in terms of examination, as well as it is also going to help you while devising your summer internship project report, because this research process is going to create the background of entire research work. If you create this, or if you learn this research framework, on the basis of this research framework, you are going to go ahead to do your summer internship project report. Though few introduction part, extensive literature part, we have already covered as per the format of the summer internship project report. But after going through this research process, you will definitely equip yourself with the nitty-gritty which is involved in doing a research. So understanding this research process is very much important, and we are going to cover it one by one. This is the research problem. First step is research problem and problem identification, and we can do this through two ways. There are two ways to do this problem identification. We do it through uh, state of nature. First, we are expected to understand the state of nature, and then we are expected to establish relationship between the variables. The examples which we people are carrying out at this point of time, like customer attitude and perception towards the product and services offered by Big Bazaar. This is the sample on which, or sample project which on which we are working. So if we want to understand the nature of this project report, we have to first understand what all variables are involved and what is the relationship between these variables. So if we want to understand the nature of this summer internship project report, we have to identify all important ingredients or variable involved into this particular project. So first, we have to identify our attitude attributes, then attribute of perception, then attribute of product and services, and how this product and services attribute usually influences your perception and attitude building process. So first we have to understand the nature of the problem, and then we have to establish certain relationship between, or we try to establish certain relationship between them. Then initially the problem may be stated in a broad and general way, and then the ambiguities, if any,
relating to the problem be solved. So what they are trying to say, initially any particular problem is said in a broad and general way. Let me take an example. Like if you take an example of China and India in terms of wheat production, for the sake of example, China is producing more wheat than India. This is the generic problem. We want to study the reason due to which China is ahead in terms of production of wheat with respect to India. So China is producing more and we want to learn this. So first, broader way, the general problem is China is producing more wheat than India, but it is a very generic or general problem. But if we want to segregate into some subsections of this problem, you'll be able to identify or reach to the main problem. Like China is producing more wheat with respect to a particular season or with respect to a particular year. This will more specifically define your problem. Later on, we can include the labor productivity index to this wheat production. Like number of labor who are involved in producing wheat is more in India than in China. That's why cost of production is more in India than in China. So if we again include these terms in wheat production, so our problem from generic problem will be converted to a specific problem. So we can write a problem statement like a study on the regions due to which China produces more wheat than India with a special reference to a particular year or a particular season by including labor production index. So this would be a specific problem. This would be very generic on a specific problem, but we started it through China produces more wheat than India. So we have to first write our problem in a broader and general way, and then we have to concise it and make it specific to a particular problem situation. Let's move ahead. Then the feasibility of a particular solution has to be considered before a working formulation of the problem can be set. We also have to check the viability with the problem which we are undertaking. We have to also check the viability of a particular product or particular problem statement. If viability will be adjusted, like cost factor, like resources factor, like available literature resources factor. So several factors are responsible in checking the viability of a research problem. If viability is justified, then we can go ahead and start doing our research. Then the formulation of a general topic into a specific research problem. I have already given you the example of China and India. So we start with a generic topic and we try to reach to a specific problem statement. Let's move ahead. In this, a researcher must at the same time examine all available literature to get himself acquainted with the selection of the problem. Later on in this slide itself, I'll tell you how we do extensive literature survey for reaching to a particular problem. Because these days, if you are identifying a problem, it looks very fancy to identify a very innovative problems. It looks very fancy. But in terms of research, if you don't have the support of literature, you are not going to complete your research anyway. So like these days, what is the impact of COVID-19 situation on the industry? It looks very fancy. But if some literature work is not supporting your research work, you are not going to go ahead with that. So for reaching to a particular problem, any researcher is expected to do extensive literature survey so that he can or she can reach to a particular problem statement. So extensive literature survey is very much important. He may, while doing this extensive literature survey, he may utilize two types of literatures. One is conceptual research and second one is empirical research literature. Conceptual literature, concept and theories which comes from textbooks. So we have to go through so many textbooks pertaining to our research problem. And again, we are also expected to go through several journals, research paper in which we are going to identify our empirical literature survey, which we get through different journals and published articles. So these are the two resources which are going to help us in reaching a particular problem. Let's move ahead. Now, this is the process, and
I have already discussed it in our extensive literature survey part, and how we are going to devise our objective. We have already discussed, but for the convenience at this point of time, I'm again going to reiterate it. Every problem starts with literature survey, and through literature survey, we usually identify our gap. Once we have identified our gap, we reach to a particular problem area, and through problem area, we devise our objective, and by devising our objective, we reach to a particular research problem, and then we start our research. So on the basis of this entire background work, research takes place. So extensive literature survey is important. Once we are done with extensive literature survey, it will give us gap, then it will give us problem area, and we are going to reach to objective of our research problem. So this would be the research problem identification process, and we are going to go ahead with it. Second step involves extensive literature survey. Basically, any researcher or any particular PhD scholar is expected to submit a synopsis, which synopsis is going to cover all the nitty gritty which is going to be involved in his or her research paper or research work, like how you are going to go ahead with your data collection, how you are going to collect the data analysis, how you are going to do your sampling, how you are going to do your extensive literature work. Every framework you are going to mention it in your research synopsis. But to do this, you have to give or do extensive literature survey, without which you are not going to do or not be enabled to propose your synopsis or present your synopsis. At this juncture, researchers should undertake extensive literature survey connected with the problem. For this purpose, and one more important thing, like extensive literature survey should always be there related to or pertaining to your research problem. You cannot start doing extensive literature survey haywire. Your topic is something different and you have started working on some different literature work. So it is not going to serve the purpose. So you have to do extensive literature survey which is pertaining to your research problem, and you have to stick to that research problem only. For this purpose, the abstracting and indexing journals and published and unpublished bibliographies are first place to go to. These are the places where any particular researchers will look into, and they'll get the base for their research work. These are the resources: academic journals, conference proceedings, government reports, books, etc. must be trapped depending on the nature of the problem. So these are the basic resources through which we are going to cover our or do our extensive literature survey. In this process, it should be recommended that one source will lead to the another. What we usually struggle in doing our extensive literature survey, like while doing our extensive literature survey, if you find a particular research paper common in most of the research paper, always try to stick to that. Before starting extensive literature survey, people usually flounder what to do, where to do, how to start, which paper to stick to. So first you have to start with some generic research papers, and through those generic research papers, if you are finding 2 or 3 common papers you are seeing in every case. For my example, if I'm going to do a survey on attitude and perception building process, and if we are going through several research work which are going to handle this perception and attitude process, then if some common papers are coming, then I'm going to go into the reference section of those common papers, and I'm going to research or do extensive literature survey of all those papers which are being mentioned in those common papers. So you'll become very specific while doing your extensive literature survey, because database is huge. Means if you start doing your literature survey, at least 1 lakh or 2 lakh resources would be available. So you may flounder. So which way to start and from which particular extensive literature survey resource to use. So always try to go through some basic and famous research journals, and through those research journals, if you are going to get some common papers which is reflecting in most of the papers, always try to stick to that and go into their reference, and on the basis of their reference find out those research papers and start working on that. So this is the basic idea behind this extensive literature survey, and it usually helps. That's why I'm discussing it.
But at the summer intensive project report, I don't think you people are going that much deeper. You have to start working on some generic topic, and generic literature survey is expected to be done at your level. Earlier studies, if any which are similar to the study, hands should be carefully studied, and a good library will be a great help to do this extensive literature survey. Then comes working hypothesis. What is working hypothesis? It is a tentative assumptions made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. Or you can say it is an assumptions which can statistically be tested. Hypothesis is an assumptions. We are usually going to predict the result before the start of this research project. At the end of research, we are going to find these kind of research. For my case, which the sample which I'm creating at this point of time is attitude and perception of product and services being offered by Big Bazaar. So I'm going to establish, if I'm going to build hypothesis, I'm going to build hypothesis between different factors like attitude. 7 P's of Big Bazaar influences attitude. 7 P's of Big Bazaar influences perceptions. These are the relationships. So if I'm going to create hypothesis at this point of time in the beginning of the research through extensive literature survey, which I have already mentioned in my outline of the project, resources has already been shared with you in the description box of this lecture video. So you can go through those extensive literature work as well as outline of the project where I have mentioned. But if I'm going to go through this hypothesis process, I have to generalize or assume certain things which is expected to be tested at the end of this entire research project. So hypothesis is basically an assumption which we are going to test empirically through our data, whether it is a correct assumption or a wrong assumptions. So we are going to deal, problem is at the summer internship level, many people usually abstain to do this. If you are going to go ahead with the process of hypothesis building and you are going to test it at the end of it, would be a great work for MBA student. So always try to go through it, try to understand the process, build certain hypothesis, and try to test it empirically at the end of it. If you are going to go through this process, your research acumen will increase, and at the time of company joining, if you are going to be asked to do certain kind of research, you would surely be able to do a proper research for your company. So try to exceed your limit, try to come out of your comfort zone, try to use these hypothesis techniques, and try to justify at the end of it. We are going to teach you how to do this hypothesis testing at the section of data analysis part, and I'm going to start it from the scratch so that every nitty gritty is going to be dealt in detail in that section. So how we are going to develop this hypothesis? So there are 4 ways. First, discussion with colleagues, then examination of data and records, review of similar studies, and exploratory personal investigation. These are the 4 ways through which you can build your hypothesis. In most of the cases, we take help from immediate colleagues who are also working in the same kind of project. So these people are going to be an asset for you. And while discussing things with your colleague, they are also going to help you while devising your hypothesis. Then examination of data and records which are already available pertaining to your research problem. You are going to go through that and try to build this hypothesis. Review of similar studies, exploratory personal investigation is also going to help you while devising your hypothesis of the project. Let's move ahead. This is research problem having been formulated in clear-cut terms. The researcher will be required to prepare a research design. So research design is the basic framework under which any research is to be carried out. If you want to do a research, you have to create certain framework, and this framework is going to be called as research design. So in research design, if you are going to cover some basic questions like what to do, where to do, how to do, when to do, by whom it should be done, all these basic questions are going to be covered in this research design. So he'll have to do certain things in this devising this research design. He will have to state the conceptual structure within the research would be conducted, and what kind of time, energy, and money is going to be invested while dealing with it.
The research purpose should be devised very properly. And while devising our research design, there are certain ways, or it can be categorized into three major parts. First, exploratory design. Second one is descriptive design. Third one is experimental and diagnostic design. Exploration means things are not clear. Most of the cases we are going to go through some case study method or exploration method, literature survey method to do this exploratory part or exploratory research design. In descriptive, we are going to go ahead with the explaining things which are existing at this point of time, and we are not going to manipulate with the variables. Means a state of affairs as it exists at present, we are going to follow this in descriptive research design. In diagnostic or experimental design, these are controlled design where we are expected to manipulate with the variables. So once we'll do this in our research design, you will clearly understand what these three terms means. If you take an example, like for exploration, if you are not able to build a robust process of a paint industry, you can take an example of Asian Paints. So you are going to study through several case studies, you are going to reach to a particular problem or a solution. Then you are going to do exploratory research design. Descriptive research design, suppose if some people are going for a morning walk and one group is going for a morning walk, another group is not going for a morning walk. So people who are going for a morning walk, if we'll check their lipid profile, if some difference is there, we are going to do this descriptive research design part, because we are just explaining things as it is. We are not going to manipulate with the variables. But in diagnostic things or experimental things, like take an example of sales training, and if we are going to go give this sales training to the sales force, and if sales force started performing well, that means we are going to say there is an impact of sales training on the sales performance. So there is a direct relationship between the sales performance and the sales training. So these are the three examples which you can quote, and these are the three ways of going ahead with the research design. We'll have to increase our pace because I have to revise everything in Hindi at the end of it, and involves usually the consideration of the following: by what means you are going to obtain the information, availability and skill of the researcher, that resources which is there in your hand, and the explanation of the way, the process through which you are going to collect that data and organize that data, and what the procedure you are going to follow, you are going to deal in this research design, and the time available for the research. The questions which I have already raised or explained at the beginning of it, like it always covers what to do, when to do, where to do, how to do, and by whom it should be done. ये चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, कहाँ होंगी और किसके द्वारा किया जाएगा. These are the basic questions. If you are going to handle all these basic questions, you are going to devise your research problem quite comfortably. Then fifth step is our sampling design. Fifth step is our sampling design. In sampling design, there are two ways. So this sampling design itself a different chapter. So I'll go ahead very fast. Try to bear with it and try to relate things which I'm going to discuss at this point of time. So in sampling techniques, we are going to go ahead with two kinds of probability and non-probability design. In probability sampling, we are going to go ahead with sample, random, systematic, stratified, cluster, and multi-stage. In non-probability, we are having convenience, quota, judgmental, and snowball. So these are the 9 types of different sampling methods. These are the 9 sampling methods, and just I'm going to brief you. Simple random is basically equivalent to the lottery method. Systematic, we usually give order to our selection. Stratified, first we convert heterogeneous data into homogeneous and then we select it randomly. Cluster, we make different clusters, and out of those clusters we are going to select entire cluster as a whole randomly. Then multi-stage, we are going to reach to our sample size in different stages. That's why it is called as multi-stage. Probability is basically saying chances of getting selected of every single unit remains the same. हर बंदे के सिलेक्शन के चांसेस अगर बराबर हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं. तो लॉटरी मेथड यूज करें, सिस्टमैटिक मेथड यूज करें, स्ट्रैटिफाइड करें, क्लस्टर करें, वी आर गोइंग टू गो अहेड विद प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सेज chances of getting selected of every single unit does not remains the same. Then
We are going to go ahead with convenience sampling. As per your convenience. Quota sampling, a specific quota is to be selected. That's too on the basis of your convenience. Judgmental, on the basis of judgment of the researchers who are having expertise of handling things. They are going to use this judgmental sampling. Snowball sampling is a reference giving sampling. I'll take this or cover this through slides on. I'll give you some examples. So go ahead with this first. Universe and population, they have defined it. All the items under the consideration in any particular field of inquiry constitute universe. If you take this or try to understand this, if this is your universe and this is your sample, if this is the population, if for example, if you are going to do customer attitude perception, a study of Big Bazaar product towards Big Bazaar product and services, the people who are using Big Bazaar product and services, they are going to constitute your entire population. And the sample on which out of that big population, you are going to select certain cross section of people, that would be called as sample. So this is the process. If you talk about sampling design, we have to select different ways are there to select these samples. So we are going to utilize those 9 ways of selecting these samples. Probability samples, we have already discussed probability sampling, where chances of getting selected of every single unit remains the same. Non-probability does not remains the same. So first, simple random. Simple random is basically every item in the population has an equal chance of inclusion in the sample. If you remember this statement, your half of the work is done. Means every single unit chances of being selected remains the same. So as the definition of probability samplings itself saying, chances of getting selected of every single unit remains the same. That means simple random is also going to follow the same suit. So every item in the population has an equal chance of inclusion in the sample. So we are going to utilize this. Take an example of 300 items from a universe of 15,000 items, and then we put the names or numbers of all 15,000 items on a slip of papers and conduct a lottery. Using the random numbers tables is another method of doing this random sampling. So one by one, if we are going to pick from that box where 15,000 people's names are there, one by one we'll select each item and we'll complete our sample size of 300 items. Then we are going to do this simple random technique, where chances of getting selected of every single unit remains the same. Then systematic, we are going to give order to our selection, 5th item, 10th item, 12th item. That's why every unit which is going to be part of our sample, they don't have the idea that we are going to be selected in this sample. So here also chances of getting selected remains the same. For example, if you are sitting in your class and I'm selecting every 5th person sitting on the desk. So 5th person, then 10th person, then 15th person, then 20th, then 25th, then 30th. All those people will keep on selecting till my sample size is getting completed. So 15th item, 10th house, these are the way we usually give order to our selection. That's why it is called as systematic sampling. Next, stratified. Stratified is basically called as stratified because we are trying to make a strata on the basis of certain commonality. So does not constitute a homogeneous group. If your entire group is not homogeneous, then we'll try to convert that heterogeneous group into homogeneous, and from that homogeneous group we are going to select that sample. So population is stratified into number of non-overlapping subpopulation, that is called a strata, and then random selection is going to be selected through that sample. That's why it is called as stratified. Example you can take in your MBA class itself. If people are of the age group of 20, 21, 22, 23, so if I'm going to segregate or make a group or different strata of 20-year people, 21-year people, 22-year people, and out of those 21 and 22 years people, different 3 strata, if I'm going to select different sample size through that, then we are going to justify our stratified sampling technique. Then comes cluster.
Cluster sampling involves grouping the population and then selecting the groups out of the cluster. For this, you can take an example of credit card payment, or sample size is to be kept 450. For cluster sampling, there are 15,000 card holders should be informed, and into 100 clusters of 150 card holders each. So we can make 150 card holders cluster out of these different card holders. If people are using 1000 rupees from their card, or they are filling petrol from their card of 1000 rupees in a month, there should be a one cluster. Second cluster can be made people who are using 200 or 2000 rupees for petrol filling. Third cluster can be made people who are using 3000 petrol for their vehicle. So if you are going to select or create those cluster, and out of those clusters, if you are going to select different clusters or different clusters randomly, then this technique is going to be called as cluster sampling. Then comes multi-stage. Suppose if some researcher is sitting in America, if he is going to reach to India, then reach to this UP, then UP to Varanasi, Varanasi to a particular locality or mohalla, you can say, and in that particular society, he is going to select a few houses for their research. So he is going to reach in several stages. That's why it is called as multi-stage sampling. There's state, then district, then towns, then finally certain families within the towns. That's why it is called as multi-stage sampling. Now start with the non-probability. Non-probability, as name suggests, where chances of getting selected of every single unit does not remains the same. Means people usually select on the basis of their convenience. Like in my class, if I have certain favorite students, if I'm going to select on my convenience, then I'm going to use convenience sampling, because other people are not going to have the same chances of selection. That's why it is non-probability, and that's why it is going to be called as convenience sampling. Commonality between stratified sampling and quota sampling. Here also we are going to do stratification, means heterogeneous group we are going to convert into homogeneous group, and from that different strata we are going to pick certain quota number of people on the basis of our own convenience. That means here again chances of getting selected of every single unit does not remains the same. That's why it is going to be called as quota sampling. Then comes judgmental. If researcher is equipped and this researcher is well versed with the research techniques, he is going to use his own judgment while selecting people. That's why it is going to be called as judgmental sampling. Snowball, where we are going to give references. Like if I'm going to do a research on Big Bazaar, and if I'm going to ask any particular respondent that, do you know two people in your circle who usually visits Big Bazaar to shop for their daily needs? So he is going to give reference of two people. Then again, by reaching to those two people, I'm again going to reach through their reference another two people. So it will keep on increasing. If from 2 it will reach to 4, from 4 it will reach to 8, from 8 it will reach to 16. So it has started with a small number, with a single fellow, and it is increasing with every single step. That's why it is called as a snowball. It is having a snowball characteristics. A snowball at the peak of the hill, it remains a very small chunk, but at the end of the hill, when it touches the bottom of it, it becomes very large. That's why its sample size, which starts with a small size, when it reaches, or when there's appropriate sample size is reached, it becomes very large. That's why it is going to be called as snowball sampling. Then collection of data. These are the different ways of collecting data, and we are going to cover much in detail while creating database. But as a process, this is the sixth step, and in this sixth step, by observation, we are going to do direct observation or disguised observation. Direct observation means we are going to be part of that group for which we are going to do this study. So that would be direct observation. If you are going to do observation through CCTVs or some mechanical devices, we are going to use disguised observation. So these are the ways of doing some data collection. Through personal interview, means a structured personal interview, unstructured personal interview. If structured questionnaire is there and you are going to ask those questions on a structured questionnaire, that would be called as a structured personal interview.
and when things are not devised properly and on the basis of clue which is being taken from the previous question and previous answer, and if you're going to ask the next question on the basis of the previous response, that would be an unstructured personal interview. So unstructured personal interview, these are the two types, structured as well as unstructured. The same goes for telephonic interviews also. In telephonic interviews also, we are going to use structured and unstructured method. In mailing of the questionnaire, this is the most common thing. And while data preparation method or data collection method, I'm going to tell you how to create questionnaire and mail it. Google Form is the best tool available to do summer internship project report, and you are going to collect all those data online itself. Because in this COVID-19 lockdown situation, you are not going to go into the market to do those kind of services or those kind of surveys. So you are going to utilize your Google Docs platform, Google Sheet platform, or even Google Form platform to create these questionnaires and circulate it, and you are going to get those responses. Then through schedules, schedule is different from questionnaire. In questionnaire, no moderator or enumerator is there. But in schedule, one enumerator is there who is going to clarify things to the respondent, and whatever respondent is going to give, he is going to write it down on his questionnaire. So going through the entire research process, you may have to check at different levels. The execution of the project says this only. Project proceeds on the correct lines. You have to keep on changing these things or checking these things, because whether your project is going in the right direction or not, if you'll keep on checking, then only you will be able to assure the proper data collection, proper data editing, proper data coding. So time to time, you have to do the field check. Data should be coded. Proper selection and training of the interviewers is also required. Occasional field checks is also required. Then careful watch on the entire research data collection process or data fetching process is also need of the hour. Then some respondents do not cooperate. Some suitable methods should be incorporated so that more number of people can be engaged through this process. Then analysis of data. In analysis of data, there is a process. It starts with editing, then coding, then classification and tabulation. These are the 4 steps. We are going to do it in the data collection part. I'm going to show it how to code things in Excel and how to code things in SPSS. I'll elaborate everything in detail and much lucid way, so that you can engage yourself and you can start utilizing those resources while doing your own summer internship project report. So analysis of data involves coding, tabulation, data drawing, statistical inferences, hypothesis testing. Whatever conclusion you have made, again, the hypothesis you are going to you have established at the beginning of a research, you are going to test that hypothesis in this step. Once you have already done your data analysis, after doing that data analysis, you are going to match your hypothesis with the conclusion part. And if it is matches with the hypothesis, that means you have done a proper research. If it is not going to be done in the proper way, that means your hypothesis is not going to match. So I'm going to teach you, or I'm going to guide you how to build this hypothesis and how you are going to check that hypothesis or test that hypothesis. Several ways are there. And most importantly, if you are not able to mug things up of different kinds of formula, it is all right with it. Because SPSS and Excel, they don't require your formula stuff. They just need commands, and on the basis of those commands, you are going to fetch all those details. So I'm going to guide you in that. But at this step, we just test the hypothesis which we have established at the beginning of the research. Then once hypothesis testing is done, that means our conclusion has got certain reference or has certain got some backup. So we are now going to build theory or generalization of the research result. What does this mean by generalization? If we have tested our hypothesis, we have already worked on the sample. We haven't worked on the population. So I have worked on 100 sample size, but the people who are using Big Bazaar product and services, they must be in lakhs or 2 lakhs in Varanasi region. So we are going to generalize the result which I have got by working on this sample size of 100 people, and I'm going to generalize it on those 1 lakh or 2 lakh people. This generalization takes place in this step. Final step of research layout, research project layout.
And I think this research project layout we are already covering. I'm already discussing all these things, but this is the official research project layout which I have fetched from Professor C.R. Kothari book, and through that book I have just jotted it down. But one project format we are already discussing. At the time of examination, you are expected to write this format, but while doing your summer internship report, the format which I am discussing in this lecture videos, you are going to follow those structure or those summer internship project report format. So in this format, preliminary pages are there. In preliminary pages, there are 3 sections: preliminary pages, main text, and end matter. In preliminary pages, title and date, acknowledgement, forward, table of content, list of graphs and charts. In main text, introduction, summary of finding, main report, and conclusion. And the end matter, appendices, bibliography, and index. So we are going to do everything practically, so you don't have to bother about it. At the end of it, when we are going to compile the entire research project report, half of it I have already made and shared the link in the description box of this lecture video, and remaining part will also be completed within week or so. चलिए अब रिवाइज करते हैं रिसर्च प्रोसेस को, एक बार थोड़ा जल्दी चलेंगे। रिसर्च प्रोसेस में 11 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, दूसरा लिटरेचर सर्वे, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस, फोर्थ रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ रिसर्च सैंपल डिजाइन, सिक्स्थ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेवेंथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एट्थ डेटा एनालिसिस, नाइन्थ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेंथ जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड 11th प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। सो ये 11 स्टेप्स हैं। आपको ये हर हाल में रटा हुआ होना चाहिए, प्रोसेस को लर्न किया होना चाहिए, क्योंकि आप इस फ्रेमवर्क को जानेंगे नहीं तो कभी भी आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये जानना और इस रिसर्च प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दें तो आप उसमें एक एक प्रोसेस के निटिग्रिटी को समझ रहे हो, ताकि आसानी से आंसर करें। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जब आप अपने कैंपस ड्राइव के लिए बैठेंगे किसी कंपनी में, और कंपनी आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछेगी, तो उस समय में आप इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रोसेस के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देके और अच्छे से समझ लो। स्टेट प्रॉब्लम का नेचर समझते हैं और उसके बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उसको पहले हम लोग ब्रॉडर और जनरल वे में लिखते हैं और उसको फिर स्पेसिफिक टॉपिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और ऐसा करने में हम लोग उसकी फिजिबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं कि कॉस्ट हम लोग का सही है कि नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज सही है कि नहीं, हमारे पास जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर वर्क अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है व्हाइल डिवाइसिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। जनरल टॉपिक को हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। मैंने चाइना का एग्जाम्पल लिया, वीट का और इंडियन प्रोडक्शन ऑफ वीट का, दोनों में कंपैरेटिव किया, उसको कैसे हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपके साथ प्रॉब्लम में डिस्कस करी। अब आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए और रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरह के लिटरेचर वर्क होते हैं, क्योंकि लिटरेचर वर्क के थ्रू ही आप अपने प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सकते हो। और लिटरेचर वर्क 2 स्टेप के बीच में, हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बीच का एक कड़ी होता है। अगर आप अच्छे से लिटरेचर वर्क करेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर अच्छे से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तो हाइपोथेसिस को बिल्ड कर पाएंगे। और हाइपोथेसिस बेंचमार्क होता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च को करने का, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप लोग समर इंटर्नशिप में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस प्लेटफॉर्म तक लेके जाऊं और आपके लिए सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाऊं, जहां पे आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करना सिखाऊं और फिर उसको टेस्ट करना सिखाऊं। दोनों एक ही लेक्चर वीडियो में होगा, आप वेट करेंगे, आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में वो चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगे। अभी हम लोग प्रोसेस समझते हैं। तो हमारे पास लिटरेचर सर्वे 2 तरीके के होते हैं। कंसेप्चुअल लिटरेचर, जहां पे आपको टेक्स्ट बुक्स के थ्रू मिलते हैं और कंसेप्ट और थ्योरीज के बारे में पता चलता है। एम्पिरिकल लिटरेचर होता है जो प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च होता है, जो हमें जर्नल्स में मिलता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में मिलता है। जो लोग प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च किए होते हैं उनके फाइंडिंग को हम लोग यूटिलाइज करके काम करते हैं। तो कंसेप्चुअल लिटरेचर और एम्पिरिकल लिटरेचर हमें हेल्प करता है अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। ये स्टेप है जो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। पहले लिटरेचर सर्वे से हमें गैप पता चलता है, गैप से हम प्रॉब्लम एरिया का पता करते हैं, प्रॉब्लम एरिया से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे में हम जनरली ब्रीफ सर्वे समरी बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का, और जो पीएचडी वर्कर और पीएचडी
स्कॉलर होते हैं वो जनरली सिनॉप्सिस के रूप में अपने पूरे पूरे रिसर्च पेपर का एक खाका बना के देते हैं, और वो खाका बनाने के लिए आपको पूरा एक्सटेंसिव लिटरेचर करना पड़ता है, उसमें एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, बिब्लियोग्राफीज, आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे आपको पूरे रिसर्च पेपर का समझ विकसित करता है, आपके प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है, और अगले स्टेप में आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एकेडमिक जर्नल, कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो ये सारे रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आप एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करते हो, और जितने पुराने स्टडीज, अर्लियर स्टडीज हैं, और एक अच्छा लाइब्रेरी रिसोर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाइपोथेसिस अजम्पशन होता है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द रिसर्च। तो हम लोग को हाइपोथेसिस जितना बढ़िया से बिल्ड कर पाएंगे उतना ही रॉबस्ट रिजल्ट आएगा, और उसको हम टेस्ट करके एम्पेरिकली टेस्ट करेंगे, मतलब प्राइमरी डेटा के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करेंगे उस पर एनालिसिस करेंगे, और फाइनली जो हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है उसको लास्ट में हम मैच कर देंगे, जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो ये करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। आप अपने कलीग से डिस्कशन करते हो, आपके पास डाटा और रिकॉर्ड्स होता है, उसको वेरीफाई करके आप काम कर सकते हो। आपको अलग सिमिलर स्टडीज होते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हो। एक्सप्लोरेटिव पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन चीजों को किया जा सकता है। देन कम्स रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कब करते हो, कहाँ करते हो, किसके द्वारा किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हैंडल होते हैं। तो बेसिकली आप इसमें टाइम कितना लगेगा, एफर्ट कितना लगेगा, मनी कितना लगेगा, और रिसर्च पर्पस क्या होगा, ये सारी चीजों को कवर करते हो। करने का तरीका 3: एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन और डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सप्लोरेशन, चीजें जब बहुत ज्यादा हेजी हो, क्लियर ही नहीं हो, मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास इतने सेवरल ऑप्शंस हैं, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तक कैसे पहुंचे, एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कई तरह के सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम के साथ कई प्रॉब्लम्स हो, मुझे मेन प्रॉब्लम तक पहुंचना है। एक सॉल्यूशन के साथ कई सॉल्यूशन हो, मुझे मेन सॉल्यूशन तक पहुंचना है। एक हाइपोथेसिस के साथ कई अलाइड हाइपोथेसिस हो, तो उनमें से मेन हाइपोथेसिस तक पहुंचना है। तो जब ऐसे सिचुएशन में जब चीजें नहीं क्लियर हो तो आप एक्सप्लोरेशन यूज करते हो। आप में इसमें ज्यादातर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, चीजें जैसी हो वैसी बता दी जाए, वैसे में आप, जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल वाला लिपिड प्रोफाइल का यूज किया था, एक ऐसा ग्रुप जो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, एक दूसरा ग्रुप जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है, तो जो मॉर्निंग वॉक पे जाएगा उसका लिपिड प्रोफाइल अलग होगा, जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएगा उसका लिपिड प्रोफाइल अलग होगा। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं उनको फायदा होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ना मॉर्निंग जाने वालों को रोका, ना उनके जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया घटाया, जो जैसे जा रहा था आ रहा था उसको एज इट इज जाने दिया, और सिर्फ ऑब्जर्व करके बता दिया कि यहाँ पे मॉर्निंग वॉक का इम्पैक्ट आता है, मॉर्निंग वॉक से आपकी चीजें अच्छी होती है। तो आप जब यहाँ डिस्क्रिप्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, तो चीजें जैसी हो रही हैं वैसी ही बता दी जा रही है, आप उसको कहीं से मैनिपुलेट करने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटेशन में यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ प्ले करते हो। जैसे मैंने सेल्स ट्रेनिंग का एग्जांपल दिया, सेल्स ट्रेनिंग में आप सेल्स ट्रेनिंग देते हो और सेल्स परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाता है। सेल्स ट्रेनिंग देना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका सेल्स परफॉर्मेंस बढ़ जाना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में अगर वेरिएबिलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो, आप 2 घंटे का ट्रेनिंग कर सकते हो, 1 घंटे का ट्रेनिंग कर सकते हो, 1 महीने का ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा घसा सकते हो, और उसके साथ आप उसके इम्पैक्ट को चेक कर सकते हो। कई बार बिना ट्रेनिंग का भी, एक ग्रुप को ट्रेनिंग देके दूसरे ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं देके भी आप इम्पैक्ट चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेशन और डायग्नोस्टिक के बेसिस पे होती है। तो ये 3 तरीके हुए रिसर्च डिजाइन के। आगे बढ़ते हैं। आपको मीन्स पता करना होता है जिसके थ्रू आप रिसर्च करने वाले हो, कि आप किस बेसिस पे आपने डाटा कलेक्शन करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल, जो रिसोर्सेस आपको यूज करने हैं वो आपके पास है कि नहीं, किस वे से आप इन चीजों को कलेक्ट करोगे और कितना टाइम आपको ये करने के लिए, और कॉस्ट फैक्टर, ये सारी चीजें हैं जो रिसर्च डिजाइन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। आप सैम्पलिंग टेक्निक्स में आते हैं। सैम्पलिंग डिजाइन में हमारे पास 2 तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलता है कि जहां पे सबके सिलेक्शन के चांसेस बराबर हो। सबके सिलेक्शन के चांसेस बराबर हो मींस जहां पे हर एक बंदे के सिलेक्शन के चांसेस बराबर हो सैंपल में सेलेक्ट होने के। तो सिंपल रैंडम में हम सिलेक्शन के चांसेस बराबर होते, इसलिए लॉटरी मेथड से मींस इंटीग्रेट किया जाता है, या फिर उसको बोला जाता है कि ये लॉटरी मेथड यूटिलाइज करता है। सिस्टमैटिक में हम लोग एक ऑर्डर देते हैं, स्ट्रैटिफाइड में हेटेरोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करते हैं, क्लस्टर में हम पूरे सैंपल को डिफरेंट क्लस्टर्स में बांट देते हैं और फिर क्लस्टर को ही डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टी स्टेज में डिफरेंट स्टेजेस में हम सैंपल तक पहुंचते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी बोलता है जहां पे सिलेक्शन, सबके बंदे के सिलेक्शन के चांसेस बराबर नहीं हो, तो हम उसमें कन्वीनियंस रखते हैं, अपनी सुविधा से किसी को उठा लिया, किसी को सिलेक्ट कर दिया, तो क्लास में दूसरे बच्चे हैं जिसको अगर सुविधा से उठा लिया, बाकी बच्चों का सिलेक्शन का चांसेस बराबर नहीं होगा, इसलिए इसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे।
कोटा सैम्पलिंग, स्पेसिफिक कोटा, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं और स्पेसिफिक कोटा ऑफ नंबर ऑफ पीपल को उठा लेते हैं। जजमेंटल, जब रिसर्चर नॉलेजेबल होता है, जिसके पास रिसर्च का बेस होता है, दे यूजुअली यूटिलाइज दिस जजमेंटल सैम्पलिंग। देन स्नोबॉल मीन्स जहां पे आप रेफरेंस देते हो। मैंने बिग बाजार वाला एग्जांपल लिया था, बिग बाजार में मैंने दो लोगों का रेफरेंस दिया जो बिग बाजार को डेली विजिट करते हैं या वीकली विजिट करते हैं। उनसे दो लोगों से पूछा तो उन दोनों लोगों ने आगे बताया ये दो लोग भी मेरे परिचित हैं जो बिग बाजार विजिट करते हैं। उसके बाद मैंने उन दो लोगों से आगे और रिसर्च किया और फिर पता है कि आप अब आगे का रेफरेंस जो आपके परिचित में हो और वो जाते हो। तो ऐसे एक बंदे से स्टार्ट होकर आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा और जब तक सैंपल साइज बढ़ता जाएगा वहां तक जाके आप रिसर्च कैरी आउट कर लेते हो। तो ये सारी चीजों को कंप्लीट करके आप बता सकते हो। अब यहाँ पे यूनिवर्स मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था, जैसे बिग बाजार के जितने भी लोग बिग बाजार में जाके परचेज करते हैं वाराणसी रीजन के लिए, तो वो मेरे पॉपुलेशन के पार्ट है। लेकिन मैं सबके पास जा नहीं सकता, उससे स्पेसिफिक लोगों को चूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं 100 लोगों को रिसर्च के लिए चूज कर रहा हूँ तो वो मेरे सैंपल होंगे। सैंपल चूज करने के डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दिए, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में उसको एक एक करके कवर भी कर देंगे। तो उनमें 9 तरीकों से आप प्रोबेबिलिटी मेथड के थ्रू, 5 तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के 4 तरीके से आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी को मैंने डिफाइन कर दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम। अब देखो सिंपल रैंडम में लॉटरी मेथड बोला जाता है। सिंपल, अगर सिंपल रैंडम बोला जाता है तो आप सिंपल उसको लॉटरी मेथड से बोलते हो। यहाँ पे 15,000 है लोग का, इनका नाम इनके चीट पे लिख दिया, चीट पे लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में डाल दिया और मेरा सैंपल साइज 300 होना चाहिए। तो मैं 300 बार चीट निकालूंगा, निकाल के 300 अपना सैंपल साइज कंप्लीट कर लूंगा। तो ये निकालने का तरीका जो हुआ वो सिंपल रैंडम होगा। अब यहाँ पे जब मैं नाम चीट निकालने के लिए हाथ डाल रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मोहन निकलेगा, सीता निकलेगी, गोइता निकलेगी, कौन निकलेगा मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे सबके सैंपल सिलेक्शन के चांसेस बराबर थे, इसलिए इसे सिंपल रैंडम बोला जाता है। दूसरे तरीके से सिस्टमैटिक, यहाँ पे हम अपने सिलेक्शन को एक ऑर्डर दे देते हैं, जैसे 5वां घर, 6ठा घर, 7वां आदमी, 10वां आदमी। तो ऐसा जब ऑर्डर दे देते हैं तो वहां पे सिलेक्शन के चांसेस फिर से सबके बराबर होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के ऑर्डर फिक्स करने से पहले किसी को पता नहीं होता कि 5th बंदा पिक होगा या 10th होगा, 12th होगा, 15th होगा। तो उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो इसको याद रखना है कि इसे याद करने के लिए आपको सिस्टमैटिक, सिंपल रैंडम मतलब लॉटरी, सिस्टमैटिक मतलब गिविंग ऑर्डर टू आवर सिलेक्शन। स्ट्रैटिफाइड, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाना। हमारे क्लास में 20, 21, 22 साल के लोग होते हैं। 20 साल का एक ग्रुप बना दिया, 21 साल का एक ग्रुप बना दिया, 22 साल का एक ग्रुप बना दिया और सब में से रैंडम सेलेक्ट ले 10-10 लोग को सेलेक्ट किया और 30 का सैंपल साइज पूरा कर दिया। तो हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाना और होमोजीनियस को स्ट्रेटा बोलना, और इसीलिए इस पूरे टेक्निक को हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में हम क्या करते हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जहां पे यहाँ पे कार्ड होल्डर का एग्जांपल दिया गया है, तो अगर 15,000 कार्ड होल्डर्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, 100 क्लस्टर बना दूंगा 150 कार्ड होल्डर्स का। तो मैं इनमें से अब मैं कोई 15,000, तो इसमें जितने भी क्लस्टर्स बने हैं उसमें से रैंडमली पूरे क्लस्टर को, एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरे क्लस्टर को, इस पूरे में एक पूरे क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करना है, इसीलिए इसको हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। मल्टी स्टेज, हमारे अलग अलग स्टेज के थ्रू होते हुए हम अपने सैंपल साइज तक पहुंचे, उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। जैसे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, अमेरिका वाला एग्जांपल दिया, अमेरिका वाला पहले इंडिया आएगा, इंडिया से यूपी आएगा, यूपी से बनारस आएगा, बनारस से किसी खास मोहल्ले और सोसाइटी में जाके अपना सैंपल साइज सेलेक्ट करेगा। तो ये जब करेगा तो ये मल्टी स्टेज में आएगा और यहाँ पे इन सैंपल साइज को कलेक्ट करेगा। इसकी वजह से इसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट होता है। कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी का पहला टाइप होता है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, और नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा है, कन्वीनियंस सैंपलिंग मींस ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन कन्वीनियंस। कोटा सैंपलिंग एक स्ट्रैटिफाइड वाला अगेन जाता है। यहाँ पे भी हम स्ट्रैटिफाइड करते हैं, उसको हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बना देते हैं। लेकिन होमोजीनियस बना लेने के बाद हम एक स्पेसिफिक कोटा उससे चूज करते हैं, इसीलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में रखा जाता है। फिर आता है जजमेंटल। रिसर्चर बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इक्विप्ड है, तो वो अपने जजमेंट के बेसिस पे भी सैंपल साइज को सेलेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। स्नोबॉल, मैंने रेफरेंस वाला एग्जांपल दिया, जहां पे हम रेफरेंस के थ्रू अपने ऑब्जर्वेशन, अपने सैंपल साइज तक पहुंच सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा के कई तरीके हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनर और थ्रू शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन 2 तरीके से, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। पर्सनल इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, टेलीफोनिक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, क्वेश्चनर मेल करने का, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैं गूगल फॉर्म और डॉक्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चनर क्रिएट किया जाता है और कैसे गूगल फॉर्म के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है, वहां से फीडबैक लेके आप
कंप्लीट कर सकते हैं। और थ्रू शेड्यूल्स दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चनर और शेड्यूल में दोनों में डिफरेंस है कि क्वेश्चनर में कोई इन्यूमरेटर नहीं रहता है और शेड्यूल में हमेशा इन्यूमरेटर रहता है जो आपको क्वेश्चनर फिल करने में मदद करता है और चीजों को इंटरप्रेट करके आपको बताता भी है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बोलता है कि आपको पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान टाइमली चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर डेटा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, कोडिंग सही से हो पा रहा है कि नहीं, जो आप सेल्स पर्सनल या फिर इंटरव्यूअर और जो रिस्पॉन्ड नोट करने के लिए गया वो इक्विप्ड है कि नहीं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, ओकेजनल फील्ड चेक्स भी करना है ताकि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो अलाइंड वे में हो रहा है कि नहीं, कि आप अलग डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हो और वो डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो अलग ही डायरेक्शन में हो रहा है, ज्यादा नॉन रिस्पॉन्डेंट्स तो नहीं है, ज्यादा कैजुअल तरीके से तो फॉर्म नहीं फिल कर दिया जा रहा है। उसी तरह से केयरफुल वॉच आपको करना पड़ता है ताकि आप चीजों को ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। देन फिर एनालिसिस आता है। एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एनालिसिस में आपके पास कोडिंग टेबुलेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो स्टार्ट होता है एडिटिंग से, एडिटिंग से फिर हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग से क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन से टेबुलेशन करते हैं। ये 4 प्रोसेस होता है डेटा एनालिसिस के। इसको अगर ढंग से हम लोग एसपीएसएस पे करके देख लेंगे, एक्सेल पे कर लेंगे, पूरे प्रोसेस को हम लोग डेटा एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। बेसिक पर्पज होता है जो डेटा एनालिसिस आया उसको कोडिफाई किया, कोडिफाई करने के बाद एडिट किया, पहले जितने रॉ डेटा फालतू के डेटा थे उनको ऑब्सोलीट कर दिया, फिर उसको कोडिफाई किया, कोडिफाई करने के बाद उसको क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद उसको टेबुलेट कर दिया, तो उससे बेसिक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में आसानी होती है। और जब हम लोग कंक्लूजन डेटा एनालिसिस के थ्रू निकल चुके उसको फाइनली हम लोग अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर लेंगे और फिर हम कंक्लूजन को बोलेंगे जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस बिल्ड किया था ये जस्टिफाई हो रहा है और हम पूरे रिसर्च रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन जनरलाइजेशन, हम लोगों ने काम किया हुआ है सैंपल पे और हम इस चीज को जनरलाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन पे, तो यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे उस चीज को हम जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन पे, उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट। और ये फाइनली लेआउट है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो इस लेआउट के बेसिस पे आप फॉलो कर सकते हो। और एक फॉर्मेट जो हम लोगों ने समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए बोला, ये एग्जामिनेशन में जब आप लिखोगे तो इस वाले फॉर्मेट को लिखना, और समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैरी आउट करोगे तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैरी आउट करना। तो मुझे लगता है कि ये 11 स्टेप्स आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और अगर इसको आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लोगे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसको आप हमेशा अपने दिमाग में बैक ऑफ माइंड में समर इंटर्नशिप करते वक्त रखे रहना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से पूछे जाएंगे और पूरा रिसर्च प्रोसेस इसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंडर में किया जाएगा। तो ये जानना 11 स्टेप्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। सारे